Padmini Chaudhary. Today we will discuss chapter 5 of commerce, that is management, meaning, nature and its importance. So management has been defined in 4 different senses. Number 1 is management as an activity. Number 2, management as a process. Number 3, management as a group. And number 4, management as a discipline. So we will discuss one by one. Number 1, first concept or meaning of management as an activity. Management is defined as an activity, as it is the art of getting things done through people with the efforts of others. Okay, it is an art of getting things done through the efforts of others. सारे लोगों के efforts को use करके काम करवाने की एक कला, that is called as management as an activity, right? So it integrates all the 5 M's of management. 5 M's are manpower, materials, machineries, methods and money. ये सबको इंटीग्रेट करके इकट्ठा करके जैसे फिर उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाना, so that the company can able to achieve its common goal or objective. Okay, so what management as an activity, what are the various implications that we will discuss now. Management is an interpersonal activity. Why it is an interpersonal activity? Interpersonal जैसे क्यों कहा गया है? Because in order to get the things done, managers has to interact with other people. Okay, managers को interact करना रहता है, जो भी उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करने के बाद ही जैसे जो भी काम वो ले पाएंगे. दैट इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी. सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन्स दोज हु आर वर्किंग अंडर हिम. ओके, सो उसके साथ जो भी काम कर रहे हैं जैसे मैनेजर को सबके काम को कोऑर्डिनेट करके सबके एफर्ट्स को फिर जैसे वो ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रुप एक्टिविटी. विदाउट ग्रुप इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू डू इट हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. व्हाई इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी? बिकॉज मैनेजर्स नीड टू अचीव certain objective. Okay, so लोगों से काम क्यों करवा रहे? Thing is that he needs to achieve something. Whatever target, whatever objective, whatever goal has been given to the manager, he needs to achieve that with the efforts of other. Okay, so that's why it is called as goal oriented activity. Next, management is a decisional activity. Why it is a decisional activity? Because managers needs to take decisions. Okay, to manage the organization, to manage the people, those who are working under him. So he needs to take different decisions at different points of time. That's why it is called as a decisional activity also. So these 4 are the implications of management as an activity, right? Next we will discuss the next concept of management, management as a group. So what management as a group? As a group, management refers to all those persons and professionals, those who are performing the task of managing an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो भी लोग चाहिए, जो भी प्रोफेशनल, टेक्नीशियंस, एम्प्लॉइज, ओके, all those persons, those who are required to manage the organization, they constitute a group. Okay, that is called as management as a group. So it is a collective noun consisting of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कौन कौन आते हैं जैसे ग्रुप बोलने से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें आ जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीईओज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल हेड जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर्स. सो एवरीबडी इज कमिंग अंडर ग्रुप. सो ऑल मैनेजर्स from the chief executive to the first line supervisor, they are collectively known as management, right? Next we will discuss management as a discipline. So discipline here means different subjects. So as a discipline, management implies
a specialized branch of knowledge which involves the study of principles and practices of administration. So it refers to the systematized body of knowledge and a separate field of study. Okay, so there are so many branches, or we can say branches of management, or a knowledge derived from different subjects that is being utilized in this. That's why it is called as a discipline. Okay, as a discipline, management comprises of different or specialized functional areas like finance management, marketing management, personnel management, production management, etc. Okay, so this is called what? Management as a discipline. Next is management as a process. So what management as a process? As a process, management is what managers do. Managers जैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं. Management is considered as a process because it consists of several interrelated steps or elements. Okay. Next we will look at the implications of management as a process. Number one, management is an integrated process. Why it is an integrated process? Because it brings together all the human, physical and financial resources. ठीक है, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और उससे सिस्टमेटिकली कैसे काम लिया जा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड प्रोसेस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एवरीवेयर वी नीड टू मैनेज. ओके, सो हर जगह पे जैसे मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है ही है. दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस. Iterative process means as all managerial functions are contained within each other. जैसे कि for example we can take when a manager prepares a plan, he is also laying down standards for controlling. जब प्लान प्रिपेयर करता है कोई भी मैनेजर तो कंट्रोल करने के जैसे नॉर्म्स क्या क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, दैट ऑल्सो ही नीड्स टू स्पेसिफाई. सो इसमें प्लानिंग भी आ रहा है, कंट्रोलिंग भी आ रहा है, विच इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो एक फंक्शन के अंडर में जैसे दूसरा फंक्शन भी आ जाता है, तीसरा भी आ जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इटरेटिव प्रोसेस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज मैनेजर्स वर्क विथ एंड थ्रू पीपल. मैनेजर्स लोगों के साथ एंड लोगों को लेके जैसे काम कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोशल प्रोसेस. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस. सो उसको यूनिवर्सल प्रोसेस भी क्यों कहा गया है? बिकॉज एज वी हैव डिस्कस दैट इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of the nature and size of organization. Management is required everywhere. So this is all about the 4 concepts of management or 4 sense in which management is being used. Okay, thank you.